तो जैसा आप लोग को थंबनेल और टाइटल देख के समझ में आ ही गया होगा यार कि आज हम लोग गेम प्ले करने जा रहे हैं माफिया डेफिनेटिव एडिशन का, और ये माफिया पार्ट 1 है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर लो भाई, और उम्मीद करता हूँ यार इस सीरीज को भी आप लोग उतना ही प्यार दिखाओ जितने मेरे बाकी सीरीज को आप लोग प्यार दिखाते हो। तो चलिए टारगेट रखते हैं यार 3K लाइक्स का। मैं उम्मीद करता हूँ कि 1 या 2 दिन के अंदर भाई 3K लाइक्स कंप्लीट हो जाएं। अच्छा, इससे पहले जिसने भी यार माफिया के गेम्स खेले हैं या फिर वीडियोस देखी है तो उन सबको तो पता होगा, लेकिन जिसको नहीं पता उसको बता देता हूँ कि GTA से इसको हमेशा कंपेयर किया गया है। ऐसा मैंने YouTube पे देखा यार, बहुत सारी ऐसी वीडियोस है जिसमें माफिया गेम एक तरफ और एक तरफ GTA गेम। तो मुझे देखते हैं कि ये कंपैरिजन कितना सही है कितना गलत है। हो सकता है गेम बिल्कुल अलग हो। तो मुझे इस गेम के बारे में बस इतना पता है कि कहानी इस गेम की बहुत अच्छी है, मतलब ऐसा मैंने पढ़ा है। बाकी कहानी क्या है ये मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो चलिए आज देखते हैं भाई क्या कहानी होने वाली है। अभी तो फिलहाल गेम स्टार्ट ही हो रहा है। सारी लोकेशंस में मुझे लगता है ये सब अच्छी लोकेशंस है यार। यहाँ पे हम लोग को घूमने मिलेगा। ओपन वर्ल्ड गेम है जहाँ तक मुझे लग रहा है। ओ हो माफिया। अच्छा, इतना तो समझ में आ गया है मुझे कि गाड़ी सब पुरानी रहने वाली है, क्योंकि पुराने जमाने का गेम लग रहा है मुझे। हाँ भाई, गाड़ी सब पुरानी रहने वाली है और सबके लुक भी पुराने हैं। बाइक्स भी मैंने देखा भाई। ग्राफिक्स तो यार रीमास्टर्ड करने के बाद मतलब पुराने गेम को ये लोग कुछ ज्यादा ही अच्छा बना देते हैं। और अगर कोई पुराना गेम बहुत अच्छा है और उसको यार रीमास्टर्ड कर दिया जाए तो फिर तो अलग ही मजा आता है यार। जैसे मैंने अभी हाल में रेसिडेंट इविल 3 भी खेला था जो रीमास्टर्ड वर्जन था, तो मुझे वो अच्छा लगा। अब वही हम लोग यार पुराने ग्राफिक्स में खेलेंगे ना पुराने गेम्स, तो शायद उतना मजा नहीं आए। लेकिन वही पुराने गेम्स जो अच्छे हैं और नया ग्राफिक्स उसको मिल जाए तो मजा ही आ जाता है। ग्राफिक्स तो यार बहुत सही बनाया है। ऐसा लग रहा है कि हॉलीवुड की मूवी स्टार्ट हो रही है। आप लोग कैसा नहीं लग रहा है? चलो यार, इस गेम से मुझे काफी उम्मीद है क्योंकि मैंने इसकी तारीफ सुन रखी है, तो इसलिए उम्मीद मेरी एक्सपेक्टेशन बढ़ चुकी है काफी इस गेम से। ये मैं बार बार लोकेशंस देख रहा हूँ ना, मैं भूल जा रहा हूँ कि मैं गेम खेल रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कोई पिक्चर स्टार्ट होने वाली है। अच्छा, फाइनली गाड़ी सब भी दिखाना चालू। पुराने जमाने की गाड़ी मिलेगी इसमें खेलने के लिए। काफी चमक नहीं रही है यार गाड़ी। अच्छा, वैसे आप लोग कमेंट करके बताना कि इस गेम के जो मैं एपिसोड सबसे डालूंगा उसको लंबे रखूं, मीडियम, या फिर आज के एपिसोड मुझे पता नहीं कितना बड़ा बनाऊंगा, लेकिन आज के एपिसोड जितना बड़ा है उतना ही रहना चाहिए। चलो ठीक है, आई थिंक कि अब शुरू हो रहा है गेम। सारे कास्ट जो लोग मेन रोल प्ले कर रहे हैं गेम में सबका नाम लिखा गया। अच्छा, डॉन मोरेलो। डॉन तो रहेंगे यार, माफिया गेम है ऑब्वियसली डॉन लोग रहेंगे। गैंग भी रहेगी गेम में। ट्रेन से कोई आ रहा है। डेमियन क्लार्क एज डिटेक्टिव नॉर्मन। गेम का टाइटल माफिया दिया है, यानी कि मैं गैंग में ही काम करूंगा या फिर डिटेक्टिव तो नहीं बना देंगे ना यार ये लोग कहीं। ऐसा तो नहीं कि मुझे माफिया को रोकना है। अभी तो 2-3 मिनट में यार मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि करना क्या है गेम में। गेम स्टार्ट ही हो रहा था और ठीक है, टाइम लेके इन लोगों ने स्टार्ट किया है गेम को, बहुत ही टाइम लेकर। लेकिन अब पता चलेगा कि करना क्या है गेम में। ये आई थिंक कि डिटेक्टिव है जिसका लास्ट में नाम लिखाया था, डिटेक्टिव नॉर्मन। साउंड ट्रैक अच्छा है। You Tommy? Thomas Angelo, Detective Norman. अच्छा, देखा डिटेक्टिव ही यही है। टॉमी से मिलना है। टॉमी शायद हीरो है इस गेम का। No self-respecting badges coming in here unless it's the health inspector. What can I get you? Just a coffee, thanks. काफी परेशान दिख रहा है हीरो। Dip your beak. No thanks. Suit yourself. So, you said on the phone you might have a proposition for me. That's right. Well, if you're looking to set up a gravy train, you called the wrong cop. I'm not looking for any associates. Good. Because I'm on the nut. Can't even pay for the coffee. But I got plenty to trade. Let's hear it. How long you been in town? 3 years. Caught my teeth in Empire Bay. Well, they handed you the Morello case. Right out of the gate. That's what the paper says, ain't it? And what's it to you? Tough break. Case must be getting pretty cold by now. Or you got something might warm it up? Yeah, I might have something. And what's my end of the deal? You want money? Some sort of immunity? None of that. I got people I need to protect. Families.
Always the Achilles heel, ain't it? So who you got? A sick ma or a wife and a litter of kids? Wife and daughter. And no one else to watch your back, I'm guessing. Wouldn't be here otherwise. Pity that. Pa always said a man needs friends if he's going to survive in this world. Yeah. Well, in my world, it's the other way around. किसी केस के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए बुलाया है टॉमी ने। No surprise there. बदले में इसको प्रोटेक्शन चाहिए अपनी वाइफ और Look, I बेटी के can't लिए। promise anything for your family, not until I hear what you're trading. So, are you talking, or are you just killing time before they come for you? ओ भाई, You think I'm on the run? Oh, I know it, Tommy. Jesus, look at you. Surely gassed. You haven't slept for days. And your neck's got to be aching from all that looking over your shoulder you're doing. No, the way I figure it is you got someone powerful mean on your tail and they ain't giving up until you end up in the river. And you walk out that door without me, we both know you're not making it 5 steps. टॉमी को कोई मारने के लिए आ रहा है, बहुत पावरफुल आदमी। But, yeah, you stick around, you tell me your story, and maybe you got a shot at living long enough to walk that girl of yours down the aisle. Either way, looks like I'm buying you a cup of coffee. अच्छा, डिटेक्टिव ने बोला यार कोई काम का इंफॉर्मेशन दोगे तो शायद बच जाओ। Christ, I don't know how everything got so balled up. No one ever sees the haired pen until it's too late. But you didn't get handed a heater in the nursery, did you? No. I was a cab driver back in 30. ओ भाई, तो ये अब अपनी कहानी सुनाने जा रहा है डिटेक्टिव को, किसके साथ क्या हुआ और ये क्यों गैंग के चक्कर में पड़ गया। तो साल 1930 से कहानी अपनी स्टार्ट की है टॉमी ने। उस टाइम टैक्सी चलाता था टॉमी। I mostly drove nights because the money was better. It was at the end of one of those shifts when I first met Polly and Sam. तो ज्यादातर टॉमी रात में ही टैक्सी चलाता था ताकि पैसे अच्छे मिले, और उसी टाइम ये मिला पॉली और सैम से, जो ये लोग भागते हुए आ रहे हैं ना, पर भाग किससे रहे हैं? जरूर कुछ चोरी करके भाग रहे हैं यार। ओहो, गोली भी चलनी स्टार्ट हो गई। चलो अब मैं वेट कर ही रहा था कि मुझे कब खेलने मिले। पॉली और सैम ने यार गाड़ी ठोक दी है। अच्छा, अब मिलेंगे यार ये लोग टॉमी से। There's a taxi here. We'll be okay. Move it. Come on. ये तो यार गन पॉइंट पे लेके जा रहा है। Where to? Anywhere. Fast. चलो फाइनली मुझे चलानी है गाड़ी। They catch up, we're dead. But you don't get to walk away. ओ भाई, I don't want any trouble. Well, you got trouble. Drive. How the hell they know we'd be there? It doesn't matter now. We just gotta lose them. How many cars we got following? One for now. But there'll be more. अगर इन दोनों को नहीं बचाया तो सैम टॉमी को भी मार देगा। I'm gonna try something. अच्छा, ये गाड़ी तो गई। You don't get to ask questions. We need to get over the river. Take the Giuliani Bridge. Okay. सैम ने ये तो नहीं बताया कि वो लोग कौन थे, लेकिन कहाँ जाना है ये बता दिया है। Hurts like hell. When we're back, I'll wake up the doc. I don't know. It might be okay. Just getting the call anyways. Hey, I see you listening, cabbie. You don't get to listen either. All I'm doing is taking you guys where you want to go. So do that. सैम और पॉली आपस में बात कर रहे थे। टॉमी सुन रहा था तो उसको मना किया कि सुनो भी मत, तुम चुपचाप से गाड़ी चलाओ। यार गाड़ी चलाने में लग रही है मेहनत। Okay, we're at the river. Where am I taking you once we're over the bridge? I'm getting tired out of questions. ये बाकी के कार गेम्स जैसा नहीं है यार, इसमें कार को मतलब घुमाने में मेहनत लग रही है, और मतलब गाड़ी उतनी तेज भी नहीं भाग रही है। ये तो टैक्सी है, ऑब्वियसली ये तेज भागेगी नहीं। Ah, shit. रास्ता ब्लॉक कर दिया, बहुत अच्छा। F से रैम करना है। अच्छा, ओहो, चलो। I know some shortcuts that'll slow them down. I don't care how you do it. Just shake them off. ठीक है, शॉर्टकट यूज करना है। ये जो व्हाइट वाला बना, आई थिंक ये शॉर्टकट है। अच्छा, शॉर्टकट है। शॉर्टकट यूज करते रहना है मैप देख देख कर। I lost him, didn't I? Not all of them. ये सामने रास्ता खुला है कि अच्छा बंद है यार। Sometimes business partners fall out. It happens. Quit yapping, Ollie. More he knows, more chance of him not seeing the sun come up. I ain't heard a thing, fellas. ओ भाई,
इन लोगों ने बोला कि अगर ज्यादा इसको पता चल गया ना तो इसको मारना पड़ेगा, यानी कि टॉमी को। इसलिए टॉमी ने बोला मैंने कुछ सुना ही नहीं भाई। ओ भाई साहब, उड़ाने ही वाला था मैं, चलते हुए लोगों को मार दिया यार। कोई ठीक नहीं, मिशन फेल हो जाए, इसीलिए उन लोग से भी बच के ही चलना है। ये मैप है, मैप कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। अच्छा ये चीज भी मुझे अच्छी लगी कि गाड़ी का स्पीड मीटर बगल में बना हुआ है। वो अलग बात है कि अभी ज्यादा स्पीड में हम लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि टैक्सी में है। आई होप कि आगे कोई अच्छी गाड़ी मिले जिसको स्पीड में भगा सके। मैप में देख के शॉर्टकट में जाते रहना है। Next time we take more muscle. We should have expected trouble. But when the boss hears about this, there'll be hell to pay. पॉली और सैम का बॉस कोई और है, यानी कि कोई बड़ा ही डॉन होगा यार इन लोग का बॉस। एक और शॉर्टकट मुझे दिख गया है सामने। चलो एक और गाड़ी गई, एक और शॉर्टकट बचा हुआ है मैप में। There's more and more of them. We're not gonna last long unless we're back on our own turf. Let's get back to the neighborhood. इन लोग को अपने इलाके में जाना है वरना ये लोग बचेंगे नहीं। ड्राइव टू लिटिल इटली। ये लोग जो दौड़ा रहे हैं मुझे लगता है शायद राइवल गैंग के लोग हैं शायद, या फिर इन लोग ने यार पॉली और सैम ने कुछ कांड किया होगा। पर जो भी है अभी टॉमी को ये लोग कुछ नहीं बता रहे हैं। ठीक है, ब्रिज के पास ले जाना है। चलो मैप में मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पीछे से गोलियां भी पड़े जा रही हैं, है ना? हाँ, आगे से घुमाने वाला था लेकिन घुमाने नहीं दिया इन लोगों ने। कोई बात नहीं, यहां से घुमा लेते हैं। रोड पे डायरेक्शन बन जा रहा है कहां पे घूमना है। हाँ बस पहुंच ही गए अपने लोकेशन तक। ब्रिज खुला हुआ है, ब्रिज ऊपर हो गया भाई। ये उड़ाएगा ब्रिज से गाड़ी। वो लोग रुक जाएंगे, ये उड़ा के ले गया है गाड़ी। अभी भी टॉमी का काम खत्म नहीं हुआ है, इन दोनों को इनके लोकेशन तक छोड़ के आना है। सैम यानी कि ज्यादा चालाक है। पॉली टॉमी के सामने कुछ कुछ राज खोल दे रहा है, लेकिन सैम मना कर रहा है कोई भी बात मत करो, बाहर जब पहुंचेंगे वहीं पे बैठ के बात करेंगे क्या हुआ। तो ये अपनी कहानी सुना रहा है टॉमी डिटेक्टिव को। चलो पहुंच ही गए। Over in front of that bar. Salieri's place. Yeah, that's the one. इस बार का नाम है सैलियरीज बार। ठीक है, Wait here. What for? You want a little something from the Don or not? ओ तो डॉन शायद इनाम देंगे। उनके आदमी लोग को यार सेफली पहुंचा दिया है, तो जो इन लोग के बॉस यानी कि डॉन है पॉली और सैम के, वो टॉमी को शायद कुछ इनाम देंगे या पता नहीं मार भी सकते, कोई ठीक नहीं है यार। देखते हैं। पॉली को पैर में चोट लगी है ना, ये लोग गाड़ी में बात कर रहे थे कि पैर में चोट लग गई है। यार ये GTA 5 टाइप का गेम नहीं है, ये मैं 10 मिनट खेल के ही बता सकता हूँ, क्योंकि गाड़ी चला के मुझे बिल्कुल ही अलग लगा। यानी कि जैसा आपको GTA 5 में फील आएगा वैसा इसमें नहीं आएगा। ये मुझे लग रहा था मैं ओरिजिनल गाड़ी चला रहा हूँ। ये डॉन के आदमी लोग बात कर रहे हैं कि ये कौन लड़का है। यार ऐसा खतरनाक म्यूजिक क्यों होने लगा? ये गोली मारने आ रहा है क्या? ओ भाई बंदूक निकाल रहा है आई थिंक। ये गाड़ी स्टार्ट कर ली टॉमी। पैसे दे रहा है। Compensation for your services. Any damage to your car. This makes us square. ठीक है, पैसे दिए यार, गोली नहीं मार रहा था। I'm sure it's more than enough. Good. Don Salieri wants you to know that he's very grateful. So if you ever need anything, maybe a loan or some honest work, don't hesitate to ask. Don doesn't forget his friends. Yeah, okay, thanks. तो ये डॉन सैलियरी के आदमी ये दोनों पॉली और सैम, और उन्हीं का बार भी है। One more thing. This matter stays between us. Anyone asks where you got that money,
You wanted it poker. सैम ने मना किया बताने कि पैसे कहाँ से मिले। Scratches on your car. You swerved to keep from hitting a little old lady. You got it? No, of course. गाड़ी में स्क्रैच कैसे लगा है ये भी मना किया बताने किसी को। See you around, kid. सैम ने बोला है कि कोई भी मदद चाहिए डॉन से तो बता देना, क्योंकि डॉन के आदमी लोग की हेल्प की है टॉमी ने। किसी तरह का काम चाहिए होगा या फिर उधारी चाहिए होगी पैसों की, तो डॉन सैलियरी मदद करने के लिए तैयार है। When I opened the envelope, I could have had a heart attack. Enough to fix the cab. Nearly enough to buy a new one. I thought about what Sam said about work. I wasn't interested. The money was good, sure, but I didn't want to get in with criminals. Better to be poor and alive than rich and dead. So, right there, back then, I was out. तो टॉमी ने सोचा यार कि भले ही पैसे बहुत मिल जाएंगे क्रिमिनल लोग के साथ काम करने में, लेकिन जान कभी भी जा सकती है, इसलिए टॉमी ने फैसला किया कि वो इन सब के साथ काम नहीं करेगा, क्योंकि भले ही टॉमी गरीब है लेकिन जिंदा तो है ना कम से कम। After that night with Salieri's guys, I was back working as soon as I could. But it felt different. You get a lot of time with your thoughts when you're a cabbie. And other people's thoughts too. अब इसको काम करने में कहाँ मजा आएगा यार, इतने पैसे देख You लिए। there. Driver? Yes, ma'am. Are you driving or loitering? Driving, ma'am. Always driving. चलो ठीक है, काफी खूबसूरत गेम है यार, दिन के टाइम में अच्छा लग रहा है देखने में, रात में भी अच्छा लग रहा था लेकिन। Hurry, I have an appointment. अच्छा ठीक है, मैं लेके जा रहा हूँ गाड़ी से। So where to? St. Michael's Church, directly. चलो ठीक है, गाड़ी लेके जानी है और किसी को टक्कर नहीं मारनी है। Please. I always drive careful. Then you'd be the first. एलसी स्पीड लिमिटर, ओ भाई अच्छा, स्पीड लिमिटर ऑन करने के बाद उस स्पीड से मैं ऊपर नहीं जा सकता हूँ, ये जानबूझ के रखा है क्योंकि अभी मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ तो रूल्स नहीं तोड़ना है। देखो मिशन आ गया है कि अच्छे से गाड़ी चलानी है और कानून को फॉलो करना है। Church. It's Sunday already. Eyes on the road, please. ये बेचारा बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आंटी जो पैसेंजर बनी हुई है उनको बस टेंशन है कि सही से गाड़ी लेके जाओ, और डांट भी रही है बीच बीच में। एक बार गाड़ी चलाने के इतने पैसे इसको मिल गए टॉमी को, इसलिए अब यार ये ऑनेस्ट काम करने में इसको मजा नहीं आ रहा है। मतलब टैक्सी चलाने से कितने ही पैसे मिलते होंगे, और एक बार गलत काम करने के बहुत पैसे इसको मिल गए, तो अब यार इसका मन नहीं लग रहा है काम करने में। ये देखो, अगर पता नहीं मैं टक्कर मार दूंगा तो मिशन फेल होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा हूँ क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है साफ साफ कि सही से गाड़ी चलाओ और लॉ को फॉलो करो। तो इसलिए भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सही से गाड़ी You're on the चलाऊं। wrong side of the road. अरे हाँ सॉरी आंटी सॉरी, रॉन्ग साइड में चला गया था, इनको चर्च लेके जाना है। Stop ठीक है। there, by the park. पार्क के पास गाड़ी रोकनी है, ठीक है आंटी। चलो पहुंच गया आई थिंक। Here you go. St. Michael's. That'll be 30 cents. The only tip I'll give you is to stop smoking in your vehicle. I felt like I was sitting in an ashtray. Sure. Whatever you say. आंटी बोलते हुए जा रही है यार कि गाड़ी में सिगरेट मत पिया करो, धुआं भर गया है गाड़ी में। कुछ ना कुछ बोलते हुए जा रही है, अब क्या करना है? अच्छा, दूसरा पैसेंजर ढूंढना है मेरे को, यहाँ पे स्ट्रीट में खोजते रहना है। ऐसे मैप में तो कुछ नहीं बना हुआ है अभी तक फिलहाल, लेकिन मुझे इस जगह पे खोजना है। देखो भाई, किसी को चाहिए यार टैक्सी, बता दो। आई थिंक मिनी मैप में एक वाइट सा बना हुआ है ना, आई थिंक वहीं जाना है। आई होप कि वहीं जाना हो। रुको जाके देखता हूँ यार, वो पैसेंजर लग रहा है शायद। हाँ ये तो रहा टैक्सी, हाँ आ गया। बैठिए सर, कहाँ जाना है आपको बताओ। कुछ ही देर पहले यार गाड़ी उड़ा रहा था मैं, और अब धीरे धीरे चला रहा हूँ। ठीक है, कहाँ लेके जाना है Art इनको? gallery. Get me there quick. Sure. Quick I can do. ओ भाई साहब, इस बार टाइमर लगा दिया है यार। Taking some time out. What's it to you? Not much. Just talking. I'm paying you to drive, so do that. 1 मिनट 40 सेकंड से भी कम टाइम है, 1 Look at him मिनट out लगभग there. 36 The सेकंड। problem with this downturn is that it's made people lazy, giving them an excuse. The work's not out there, pal. The work is always there. You just have to find it. I get it. You're a busy guy. I don't see so many these days. I saw this crapshoot depression coming. Sold up before the crash.
So yeah, I get to be busy. Your busy day is gonna be looking at old paintings? I have a business meeting there with a colleague. Not that it's anything to do with you. If you ever find a real job, then maybe you'll understand. Until then, drive and quit bothering me. Yeah, I get you. 1 मिनट लगभग टाइम बच गया और इसको पहुंचाना है यार काफी दूर, यानी कि गाड़ी अच्छे से भी चलानी है और इसको जल्दी भी पहुंचाना है। भाई 55-54 सेकंड बच गए यार, और गाड़ी में उतनी तेजी भी नहीं है क्योंकि टैक्सी है तो बहुत ज्यादा तेज नहीं चल रही। स्पीड मीटर बगल में बना हुआ है। अब यार ये तो सीधा रोड है, इसमें तो मैंने फुल स्पीड चला ही दी है गाड़ी। अब देखो इतनी ही तेज जा रही भाई गाड़ी, क्या कर सकते हैं। बहुत कम टाइम बचा है, 36 सेकंड और बचा है। किसी को उड़ाना भी नहीं है गाड़ी से, टर्न लेना है, ठीक है। अब कुछ नहीं हो सकता भाई, टकराऊं तो टकराऊं। ओ भाई साहब बचा, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है यार, जल्दी से पहुंचना है मुझे। चलो 15 सेकंड बच ही गया पहुंचते पहुंचते। जाओ भाई साहब। Thanks, pal. There's 50 cents. Don't spend it all at once. I'll try not to. अब इस काम में यार मजा नहीं आएगा टॉमी को, इतने कम पैसे मिल रहे हैं यार टैक्सी चलाने के। Every fare today's been a son of a... On to the next. भाई आज जितने पैसेंजर मिल रहे हैं टॉमी को, सब बुरे लोग मिल रहे हैं। चलो एक और मुझे सामने दिख रहा है, उसको लेके जाना है। पुलिस भी इसमें पीछे पड़ेगी जहां तक मुझे लग रहा है। आजा भाई बैठ। इसमें भी टाइमर लगेगा क्या? Oh boy, you look like shit. I've been working since 5. What's your excuse? Booze. Figures. Where are we going? Little Italy, 21st Street. अच्छा, इसको लिटिल इटली लेके जाना है। If I don't tell the cops about the liquor on your breath, you don't tell them when I break the limit. Good deal. Great deal. Got any good fares today? Yeah, some. But never enough of them. Who's got the money for cab rides since the market tanked and it all went to shit, I guess? Only reason I got you taking me places is I'm drunk and don't know better. Cops see enough drunk fellas. They're only after the people moving it and selling it. Yeah, but I've seen them go after guys for less. Guess so. If they think they can shake something out of you, they will use any excuse. This city's corrupt as all hell. Sure is. इसने पूरी पी रखी है यार जो पैसेंजर अभी मिला है। अच्छा इसको वहीं छोड़ने जा रहे हैं अपन जहाँ पे पॉली और सैम को छोड़ा था, लिटिल इटली के पास। तो वो लोग दोनों भी शायद मिलेंगे अभी। और ये पैसेंजर ऐसे बता रहा था कि अभी ज्यादा लोग के पास पैसे नहीं है क्योंकि मार्केट की हालत बहुत ही खराब है यार। लोगों के पास उतने पैसे नहीं है कि वो लोग टैक्सी में घूमे। Nearly there. Just up here on the corner, please. चलो इसको भी पहुंचा दिया है। My cousin has a coffee stand around the corner. Tell him Lucio sent you. Take a break, huh? Thanks. Might just do that. ये पैसेंजर अच्छा था, इसने बोला यार जाओ थोड़ी देर की छुट्टी लो, कॉफी पियो जाके। अपने कजन का एड्रेस बताया इसने। टॉमी के दिमाग में चल तो रहा है कि डॉन को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, या उन लोग के लिए काम करना चाहिए या नहीं। तो या ओ Hey, how you doing, pal? You remember me? कौन भाई ये लोग? Huh? Mr. Morello's a little bent. Shouldn't go helping Salieri's goons, huh? अच्छा We're gonna have to give you a beating. Just so you always remember who runs this town. Make it so you won't do much rocking for a while. Look at this guy. I didn't think he'd make it fun. Let's get him. टैक्सी तोड़ दी यार टॉमी की, और अब भागना है। अच्छा मुझे भागना है, लेफ्ट शिफ्ट से स्प्रिंट करता है। ओ भाई भागना है इन लोग से। तो ये जो राइवल गैंग थी ना उसी के लगता है आदमी लोग हैं, और क्योंकि डॉन सैलियरी के आदमी को बचाया यार टॉमी ने, इसलिए टॉमी की टैक्सी भी तोड़ दी। और अगर इन लोगों ने पकड़ लिया तो बहुत पीटेंगे यार टॉमी को। भागने ही में भलाई है। अब टॉमी के पास कोई रास्ता भी नहीं बचा यार, टैक्सी भी तोड़ दी। अब तो डॉन को ज्वाइन करना ही पड़ेगा। फिलहाल मिशन है एस्केप द गैंगस्टर्स। चलो ठीक है मैं भागे जा रहा हूं भाई, आगे रास्ता ब्लॉक नहीं लग रहा है।
अच्छा इससे चढ़ के जाना है। ये अच्छा है कि बताते रहे भाई किधर से जाना है। ये पूरा बंद है? अच्छा नहीं, बस थोड़ा ही दूर और भागना है। मिनी मैप में मैंने देखा सामने येलो बना हुआ, बस सामने दीवार से कूद के जाना है। या तो अब इन लोग से फाइट होने वाली या बच के भाग जाएगा। Look at this. ओह, पॉली और सैम मिल गए। How you doing, kid? Dino, Lou. You got business with the Don? Nah, we're just trying to talk to that cabbie over there, that's all. That right. Yeah. Well, this here's the Don's favorite driver. So anything you gotta say to him, you can say to me. Is that right? Well, I'll tell you something, pal. We ain't leaving empty-handed, that's for sure. Well, then maybe you ain't leaving at all. पॉली ने भी गन निकाल ली है। Okay, then. See you boys around. Let's go, Lou. पॉली और सैम ने बचा लिया टॉमी को। Thanks. Least we could do. Come on, let's go say hi to the Don. Don Salieri? Yeah. He's gonna want to hear about this. डॉन से मिलने जा रहा है टॉमी फाइनली। ये टॉमी अपनी पूरी कहानी सुना रहा है डिटेक्टिव को कि कैसे डॉन के साथ उसने काम करना शुरू किया और फिर क्या गड़बड़ी हुई जो इसके पीछे यार लोग पड़ गए मारने के लिए। चैप्टर कंप्लीट हो गया। मोलोटोव पार्टी, ओ भाई आग लगने वाली, यानी कि स्पेशल में। ये डॉन है, डॉन सैलियरी। What do they call you, son? Thomas. Thomas Angelo, sir. Frank told me you ran into some trouble? Yes, sir. My cab got smashed up pretty good. Morello's thugs went after him on account of Tommy helping us. This, taxi, that's your livelihood? Yes, sir. I feel a sense of responsibility here. So I'm gonna set you up with a small loan, enough to get that cab of yours fixed up. I appreciate that, sir, but I'm not looking for a handout. पैसे नहीं चाहिए टॉमी को। Then what are we doing here? I just want a shot. हाँ, अच्छा। You hear that, Frank? The kid wants my permission to get into a fight. Yes, I heard. जिन्होंने टैक्सी तोड़ी है उन लोगों को पीटना Okay, चाहता Tommy है। Angelo. All the Morello's girls hang out at a bar he owns. Paul, you know the place. Sure do, boss. Good. You can ride along with Tommy. There's a lot right next to the bar where they park their cars. Go smash up a few tin cans, send Morello a message. He can't rough up hard-working Joes in my neighborhood without getting a black eye. Thank you, Mr. Salieri. I won't let you down. पॉली के साथ मिलके किसी बार के पास जाना है जहाँ पे मोरेलो गैंग के लोग अपनी गाड़ी रखते हैं, उन सब की गाड़ी तोड़ के बदला लेना है। When you get back, we'll talk about what's next for you. ओहो, मतलब वापस आएगा तो ये बताएंगे कि अब आगे क्या करना है। यानी कि एक तरह से ज्वाइन कर ही लिया है No गैंग one को। else knows you here, so tread careful, okay? Sure. टॉमी को यहाँ पे कोई नहीं पहचान रहा है, Boss finished yet? लेकिन फिर भी संभल के काम करना है, किसी से पंगा नहीं लेना है। ये डॉन सैलियरी के लिए किसी ने लेटर लिखा है। Find anything good? Yeah, यहाँ पे खोजना है कुछ, पर क्या खोजना है मुझे पता नहीं। ये क्या है? ओ भाई साहब, अल्कोहल बनाना बेचना दोनों गैर कानूनी है, तो ये बार में बेच क्या रहा है फिर? चलो पॉली को वापस जाके ज्वाइन करना है। मुझे लगा था बारटेंडर से बात करना होगा। I don't get what his problem is with me, Paulie. What do you think I gotta do to... Think you shouldn't ask me, Carlo. Not gonna give a good answer. Anyways, I got places to be. Okay, come through this way. I'll take you to Vinny first. He's a loudmouth, but Frank and the Don have known him since forever. What's he do? We go see him whenever we need to do any, heavy lifting. We make sure we're well healed for when there's trouble. किसी विनी नाम के आदमी से मिलने ले जा रहा है पॉली। उसके बाद बोला है कि मोरेलो गैंग के पास चलेंगे हम लोग गाड़ी तोड़ने के लिए। तो सबसे पहले टैक्सी चलाने दिया, उसके बाद फिर यार
भागना पड़ा मुझे, और अब मुझे लगता है फाइनली ये तीसरे चैप्टर में टॉमी जाके मार करेगा, आई होप। Buongiorno, Vincenzo. Ciao, Polly. Oh, she's gonna sing. Who's this then? Vinny, this here's Tommy Angelo. We're doing a little job together. All right, good. Hey, you need bean shooters or rods? Nah, we just need something to write off a few cars. Huh. Oh, I got just the thing. यानी अगर गन वन चाहिए होगी तो विनी के पास आना This है। classic should do the trick. Oh! अच्छा, गाड़ी सिर्फ तोड़ना है ना अभी। That don't work out for use. I got a few cocktails here. Ay. Careful with them, no. तो इसने मोलोटोव दे दिया है। Let me know if Paulie gives you the hard time. I'll straighten him out. विनी ने बोला है कि अगर पॉली तंग करेगा तो बताना, उसको मैं सीधा कर Rocky's in दूंगा। the garage. He's a special kind of idiot, but he's got a way with cars. I don't get how this moron gets engines to burn. But I'm telling you, it's like some kind of black magic. अब जाके राल्फ से बात करनी है। तो मतलब ये लोग समझा दे रहे हैं कि गाड़ी चाहिए तो कहाँ जाना है, गन चाहिए तो किसके पास जाना है। चुप रहने क्यों बोल रहा है, ये लगता है पीछे से उसको मारेगा जाके। Hey, genius! Get your head out of your ass! Polly, you can't just sneak up on a guy like that. I'm sorry, Ralphie. I'm just busting your balls. See, you're still limping. Guess we got two cripples working here. We ain't nothing alike. You got that, Ralph? Sure, Polly. Yeah. Tommy Angelo. Good to meet you. Like I said, Ralphie here's a cracked egg. But you bring him a stolen car, he'll make it yours. Tom and me, we got a job to do. We need some wheels. How about this one, Polly? It ain't a hot rod, but it'll get you across to town. All right, let's go. You're driving. अगर गाड़ी कहीं से चुराई तो रैल्फ को लाके दे Don't दूंगा। let me catch you loafing off again. One day I'm gonna cut your brake line. अरे भाई, I don't know what Ralph's trying to pull giving us this motor. I want to show you something about the good life, and you're driving something my mom could have bought 20 years ago. If I know Ralph, he probably got it taken out of our yard. Yeah, the car's fine. It's good to get a change from the cap. You don't have to be nice about it. This thing's a tin can. So, was that whiskey back there in the truck? Yep, new supplier. You guys deal in broad daylight? Normally, nah. This was their first drop-off. And the cops know better than to come sniffing around our turf. Morello, the guy whose cars you gonna torch? Hey, it's their cars we're wrecking today, not this junker. पॉली ने मना किया कि गाड़ी मत टकराओ। The guy whose cars you gonna torch, he's got more friends on the force than us. But we're okay, so long as we're careful. Keep an eye over our shoulder. Some of the Canadian whiskey that comes through, you want a bottle? Just ask. We'll keep some back for friends. I'm no big drinker. I used to tip back bathtub gin most days, but not so much now. That stuff's no good for you. You don't have to go blind now, though. To us, you got a line in the good stuff. Well, that's good of you. Thanks. Not just the booze we supply, Tom. It's the places we deliver to. The dames they got in these places. Best tables, best food, best skirt. Some way to live. Right now, all I want to do is wreck the day of the who wrecked mine. Sure. Besides, all this could get a guy in trouble. Trouble says the guy is about to set fire to Morello's parking lot. I got you to protect me. It'll go fine. Well, if it don't go fine, try not to let him see your face. Either that, or you hit him so hard they don't remember it. पॉली ने बोला यार कि उन लोग की गाड़ी उड़ा दोगे ठीक है, लेकिन या तो वो लोग तुम्हारा चेहरा नहीं देखे या फिर इतना जोर से उन लोग को मारना कि उन लोग को याद नहीं रहा है। There's some kind of line between his streets and Salieri's streets. Not really. There's always some give and some take. Though in general, we look after Little Italy, and his guys work North Park. And more besides. You're walking on the wrong sidewalk, in the wrong part of town,
You start getting a sense you need to be someplace else. You can feel it long before they start appearing on street corners to stare you down. तो शहर डिवाइडेड है यार दो डॉन के बीच में। ये डॉन मोरेलो का इलाका है और यहीं पे आप उन लोग की गाड़ी उड़ानी है। It's close by. चलो पहुंच गए हैं। Morello's goons smoke and Joe up front and leave their motors out back. There's some lazy. They put some gorilla on guard duty, but it's always some no-name schmuck. Come on, over here. You gotta sneak in and wreck the cars. Send a message. Sure. Why are you coming with? To see if you get shot. ये देखने आ रहा है कि कहीं टॉमी को गोली लगती है कि नहीं लगती है। तो छुप छुप के जाना है और उनकी गाड़ी उड़ानी है। Go quiet. You know how to go quiet, right? Yeah, like that. छुप के पॉली को फॉलो करते रहना है। गाड़ी के पास एक गार्ड छोड़ के रखा हुआ है उन लोगों ने। No one tries to pop them. अच्छा, पॉली बता रहा है अगर तुम्हारा कोई सर देखेगा नहीं तो उस पे गोली मारेगा कैसे? Up onto their roof. I'll go keep their chump busy while you creep up and jump them from behind. जहां मोरेलो गैंग ने अपनी गाड़ी रखी है ना वहां पे एक गार्ड छोड़ के रखा हुआ उन लोगों ने। तो पॉली जाके उस गार्ड को डिस्ट्रैक्ट करेगा और टॉमी पीछे से उस पे वार करके उसको बेहोश कर देगा। ये सामने भी तो लोग खड़े हुए यार, ये लोग देखेंगे नहीं ना? भाई जाना इधर ही से है ना? हाँ, यहाँ होने वाला है यार मारपीट, ऐसा लग रहा है। पूरे गैंग के जितने लोग हैं, राइवल गैंग के, सब इसी बार के अंदर है। ये रहा सामने गार्ड, तो सामने है यार। अच्छा मुझे कवर लेना है। Hey, what the hell you doing? What do you mean, what am I doing? I mean what I say. What the hell are you doing back there? ये सिग अच्छा अच्छा ये उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है पॉली और मुझे पीछे से जाके मारना है उसको। उसी के पास जाना है ना? बढ़िया। पॉली बात ही कर रहा था, मैंने बेहोश कर दिया। डिस्ट्रॉय कार्स आ गया ऑब्जेक्टिव। कैसे तोड़ा जाए? माउस व्हील से निकालना है, ठीक है। पैड से तोड़नी थी गाड़ी यार, तो फिर मोलोटोव दिया क्यों मुझे? उससे भी कुछ करना होगा, इसीलिए तो दिया है। ये तो गाड़ी बहुत आसानी से टूट जा रही है यार। टॉमी अपना बदला ले रहा है। कोई आया? Hey, get away from the car. Knock him down, Tom. Son of. ये रोकने आया था भाई। चलो ठीक है। Come on, Tom, quick. और लोग आने वाले हैं। अच्छा, मोलोटोव निकाल के उड़ाना है आप गाड़ी को। एम करके मोलोटोव फेंकना है। अच्छा, एम का सिस्टम तो अच्छा है। उड़ गई गाड़ी। दो और गाड़ी बची हुई है। लो भाई। Whole block heard that. We gotta go. We can take Dino's car. How'd you know this is Dino's car? I don't like you, and you got a good car. I'm gonna know where you keep it. Reports of burning vehicles and gunfire in and we North can Park. take it. Old ways are the best ways. It's right near Morello's place. Don't bring it. Straight through the gate. We gotta get out of here before the bullshit. गेट तोड़ते हुए जाना है। Don't let him get away! Drive! Come back, you bastards! Yes, he's been seen. Go get him, boys. 2 स्टार। भाई पुलिस भी पीछे पड़ गई है। We got cops. तेज चलाना है। What do we do? We lose them by driving real fast and getting clear of them. Sounds good. Right now they're pissed. But let's not get them real pissed. तो पॉली ने बोला है कि अभी वो लोग गुस्सा हैं, लेकिन इतना ज्यादा उन लोग को गुस्सा नहीं कर देना, यानी पुलिस को, कि 3-4 स्टार हो जाए। अभी जैसे मैं ठोकते हुए चल रहा हूँ ना, पक्का 3-4 स्टार हो जाएगा। इसलिए अब गलती नहीं करनी है भाई, लेकिन तेजी में गाड़ी भगाते रहना है अगर पुलिस से पीछे छुड़ाना है तो। सैलियरीज बार वापस पहुंचना है, लेकिन उससे पहले पुलिस से भी पीछे छूट जाना चाहिए। हाँ, स्टार ब्लिंक कर रहा है, यानी कि मुझे लगता है खत्म होने वाला है। ओह ठीक है। Let's head back and see the boss. I thought Salieri had cops on the books. Some street cops, sure. But Morello's got the chief in his pocket. डॉन मोरेलो ने यार डायरेक्ट पुलिस चीफ को खरीद रखा है, यानी कि वो डॉन सैलियरी से ज्यादा पावरफुल है। Feel good? How'd what feel? Taking out the guy. Taking Dino's car. Feel good? Yeah.
guess it did. No time like the first time, Tom. Don't get better. You think it's for you? This life? What's it to you? Hey, I'm just asking questions. I like asking questions. I doubt that every day you and Sam go and panel beat motors in parking lots. There's busy days, there's slow days. I've had more of an introduction than I ever got. You never got to beat up Dino's pals and take his motor? Nah, stole enough cars to get noticed, I guess. When I got squeezed by the cops, knew never to squeal. And one day I found myself in a yard behind a bar drawing with Vincenzo. 10 years go by and I'm still there. So, I got a suit now, and Vinny's an old... I always thought that to be in a family you had to have more connections. Your brother, or your uncle, or... Oh, some guys, sure. Their cousin got made, or you like Carlo, whose pop went way back with the Don. That means you get trusted more when you're starting out. There's plenty of us who came in off the street. I'm thinking we get you in front of the boss, then we tip a few. Well, I don't got plans, so... Sure you don't got plans. The plans are to feed Vinny so much booze that Luigi has to roll him out the door again. What happened to the car I sent you out with? Dumped it. Why? राल्फ को ये पॉली तंग करते रहता है। राल्फ ने इसीलिए बोला था जब ये लोग दोनों जा रहे थे कि किसी दिन तेरा ब्रेक ही काट दूंगा मैं गाड़ी का, और सही में काट देगा यार, तो पॉली तो चला ही जाएगा तेल लेने। चलो ठीक है, डॉन से मिलना है जाके। अब लगता है कि टॉमी ज्वाइन कर ही लेगा गैंग, क्योंकि अब ऐसे भी डॉन मोरेलो को आदमी लोग को भी मार दिया, उनकी गाड़ी भी तोड़ दी, तो इस तरह गैंग को ज्वाइन किया था टॉमी ने। लेकिन अब आगे खेलते जाएंगे तभी पता चलेगा टॉमी के साथ ऐसा क्या हुआ जो वो भागते चल रहा है। Somehow, yeah. Hey, boss. It's done. No trouble? Yeah, nothing we couldn't handle, Mr. Salieri. Good, good. Sit down. You see Morello? Nah, but he'll be plenty pissed when his boys tell him what happened. He's not going to be able to think straight for weeks. See, that's the difference between me and Morello. I'm a businessman. I do everything with this. Every decision I make, it's what's good for the business and my boys. But Morello, he's a hothead. And all that anger burns out the brain. And when he gets mad, he gets stupid. You got nothing like that to worry about with Tommy here. He was aces the whole way, boss. I'm glad to hear it. I got a growing business here. We could use a guy like you to help out around the bar. Maybe run some errands, make sure the bills get paid on time. You up for that? Oh, it'd be an honor, sir. Good. Good. Now, Polly and Sam have already vouched for you. But you need to understand we have a few rules around here, so you listen and listen good. First, no cursing on the premises. There's a million words out there. And the man who needs to resort to is just ignorant or lazy. Second, we don't deal in the hard stuff. I don't want any dope fiends in this neighborhood. We'll let Morella poison his own people if that's what he wants. Finally, stay out of trouble with the cops. We only have a few on the payroll. And if you cross the line, the rest will come after you. You understand? Yes, Mr. Salieri. Then I'm going to only ask you for one more thing, Tommy. I don't keep Paulie and Sam around just because they're strong. A lot of guys out there bigger and tougher than these two. And I don't keep Frank on a payroll because he's smart. Though he is an artist with the numbers. All these guys in this room, they're here because they have the only thing that matters to me. The only thing that should matter to any of us. You know what that is, Tommy? They're loyal. That's right. Now, you stay straight with me, you're going to be living the high life, Tom. But you abuse my trust. Don Salieri, you won't ever need to worry about me. डॉन ने बोला है टॉमी को कि हमेशा वफादार रहना, वरना समझ ही लो। Okay, then. चलो ठीक है,
टॉमी ने ज्वाइन कर लिया है गैंग। Welcome to the family. Excellent. Now I'm starving. Luigi, let's eat. Welcome. Our barman Luigi is not much of a cook. But his daughter Sarah, Maron. तो चलो इसी के साथ यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है और यहीं पे आज का गेम प्ले हम लोग खत्म करेंगे यार। और आप लोग भी कमेंट सेक्शन बताना यार कि कैसा लगा आप लोग को ये गेम, और जाने से पहले यार वीडियो को लाइक कर लेना और नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। चलो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।